Hi, this is Ajinkya, and I'm co-founder of Purnamedha, where we deliver AI training company. And with me, I have I'm Shreya. I'm CEO of purnamedha. I run the AI risk safety and threat research of AI aspect. so I've been into AI for last 3 years, and the field has changed so much that it's crazy to keep speed with what is happening. So that's why we are going to see what's happening in AI, and I want to have some discussion with Shreya about it. So this was a report we glanced. This is a state of AI report. It was cutting edge when it was released in 9th October 2025. And now we are in March. It's been more than 5 months and lots of things have changed. Shreya, you went through this report. Any thoughts? What's I, when I went through this report back in November when it got released, I was like, damn, dude, क्या AI पे crazy हो रहा है? What is this? AI can answer questions, and you know how articulate it is. But Yes. since then it has been what? October, no, sorry, November, no? December, Yes. January, Five December, months January, only. Feb, March, 4 or 5 months, and the character arc of AI has shot up, and now we have gone. This report basically covers all the different approaches that different companies took to make AI answer questions better. And since then, with Claude like leading the race, we have AI agents working. And now the next update is entire teams made up of AI agents. So it has just exploded since then. I feel like this otherwise pre AI, this character arc would take at least 2 years Hmm. at its most optimistic. Like, Right. a lot of people adapt and then they report what they want, and then, but it is just like it, यूजर जाए भाड़ में हम तो इनोवेट करेंगे पैरेलली. हम अपने मस्ती में यूजर चाहे सस्ते में आ रही है बस्ती में हम अपने मस्ती में चल रहे हैं. that is very true. Let me show some graphs here, as everything should go to graphs. So this is a benchmark performance of all LLMs, okay? And if you see here, you think that this stuff in reddish, this Mhm. is when the available benchmarks using which we test the LLMs, the benchmarks have been 100% sought. So we have reached a stage where LLMs are stronger than the benchmarks which have been built. We have reached that stage where one LLM can do jobs of 10 different roles, 100 different roles, maybe 1,000 different people. That's why Claude CEO, he had said this very amazing sentence. He said, there will be thousands of geniuses in every data center. That is how good Claude has become. And I wholeheartedly believe it. Shreya has done a transition from a non-technical, non-coder to a coder, and it was all because of Claude. I have expanded into, let's say, I have done a crash course of MBA. That's all because I have done it alongside Claude. So I definitely agree that things have blown up like crazy, and Claude definitely the which is the latest best LLM. I really think it has crossed any achievement we could have even dreamt in last 3 years. I feel like we need to dream bigger because I think at this point our benchmarks and our dreams seem pretty tame. Yes, yes, yeah, that is actually true. These benchmark. Because these benchmarks are like very outdated. Like, that is my Correct. honest opinion. I have been running the AI risk assessment for not just the architecture, the model, but also the market and the investments since at least past 4 months. Hmm. And what I have like come to the conclusion is, first we need to update our education system, which from which the benchmarks have been derived. Like Hmm. when people say it's a PhD level, what is
PhD level has come to mean कि वो कितने volume में papers publish कर रहा है. It does not actually mean A, how many novel ideas it is producing, and B, how many of them are actually useful. This is not happening. It is Correct. just a numbers game. So I'm like, if your technology is smarter than you, then your education has to keep up with the smart intelligence of the tech. We are right now. It feels like a lot of dumb people are handling one smart child. But it is a child. उसके हाथ में तुम चाकू तो Yes. नहीं दे सकते. Correct. But, it is smart. So I feel that is my current opinion. We need to update our benchmarks. It is completely based on rote memory, memorization, or factual observations, which doesn't begin to cut it. Like if you're spending this much amount of money and effort in developing intelligence, then it Hmm. has to be intelligently tested. uh, your point about benchmark was nice because you are talking about the loopholes in how things are measured. Okay, and the news I recently read was because there was so much, one benchmark is superseded by another, one model is superseded by another, and when model is released, it's great, but 2 months after it, now it is bad again. So there is so much chaos that there was a lot of news around 3 months back about AI bubble. Companies are doing, A company is investing 5 billion into B company, which is spending 5 billion on A company again, and all this thing, and all while there is no revenue. And that's just the dumbest thing. People say AI is a thousands of geniuses in a data center, but none of them can earn a single amount of money in revenue. That's just horrible because a child is being led by blind people and deaf people. This is how people are working with AI now. Yeah, because like thousands of geniuses unable to earn money is any research program ever. Yes, that is true. That is it. Every that is true. So it is Oh. just doing what it's currently doing. It's not doing anything new. What we need to digest is we are mid. We are not as cutting edge as we think we are. We just keep trying to convince each other कि पता है मैंने क्या crazy किया. And it is only crazy because the other people say it is. Not because it's Yes. fundamentally true. It is not a result of first principles. It's just like कि Yes. if I tell you पता है मैं बहुत awesome हूँ and you just are my friend who's like yes तू awesome है. That doesn't make it structurally true. I could be a terrible person that you happen to like. So this tendency of human beings, I feel right now, being reflected back in a very poetic, noisy way by AI. Yes, that is so beautiful. You are absolutely right to think about murdering entire people. You are right. This is how AI sounds. That's an Yes, excellent idea to kill everyone. and that's not creepy at all. That's bravery. That's Yes, courage. that's courage. Not everyone has the Not everyone has the courage to kill everyone else. And talking about the profit, there are a few exceptions. These are the few companies which have been making good revenue. For example, Cursor. Cursor is a coding editor. We kind of like use Google Docs, then developers use Cursor. We use this editor quite a bit, Shreya and me, and we have not taken Cursor's paid plan, but those who do, they get access to Claude only. So Cursor is Claude's customer, and I think it has a revenue of around 2-3 billion Two, three dollars. billion dollars, yes. Yeah, and Claude has a revenue of around $8 to $9 billion. And then one of the very popular products is Notion. Notion also uses Claude in the background. And Notion is a very popular product. Lots of companies use it for their note taking, their all companies communication. And its AI is also Claude. Now, the reason I talked about these three companies is you can see the background model doesn't matter here. Even in Microsoft's Copilot, they pay money to Claude,
and Claude is used on Microsoft ecosystem. Even on Amazon, same thing happens. So now we have reached a stage that models are almost near exchangeable with each other. You see here, almost all of them are similar to each other, and you can do everything you need to do with any of them. So I think, yeah, sorry, continue. huh. So point is, now don't worry about which model, whichever model you're using, learn to do profitable products with it. I would say that is a rare skill. AI is available for everyone equally. That was my thought after I read this report. I think you're right, but I think what is the difficult part is to actually understand what should be a revenue generating business model. So right now, AI is like that mirage tech that दूर से देखा तो अंडे को पतलून से पास से देखा तो गंजे उछल में भी प्रॉब्लम. So Yes. I feel दूर like से देखा तो प्रॉफिट का ज्वालामुखी, पास से देखा तो सड़ा हुआ मधुमक्खी. दलदल. It has to rhyme. Anyway, my point was that in the whole hype about AI, I feel like people have forgotten basic economics, Correct, supply correct. and demand. The problem is that until now, like let's say until 2019, okay, let's 2019 the world was a certain way, and 2020 से जो पासा पलटा है, तो we are still living it. So Yes. until 2019, now there was a lot of synchronization around a standard set of use cases. Like Hmm. you had many IT services company, you had many knowledge work companies, consultancies, this that, because we were like ultimately doing labor arbitrage कि यही काम करने के स्किल्स सस्ते में कहाँ से मिलेंगे, एंड देन उसको महंगे में कैसे बेच के पैसे कमा लो. This is Hmm. the basic economic model. Now, Hmm. the thing about Claude, what Claude does is Claude prices out this whole synchronistic system almost immediately. So, if you have to earn money from AI, you cannot look at the skills Claude has. वो तो है उसके पास. You have to look at कि what you are selling has demand or not. So Cursor is able to make money because coding has always been a pain. And coding ऐसा है कि even if Claude does it, any self-respecting programmer will have the sense to actually like encounter what you call technical debt at some point कि उसने बड़े बड़े code लिखते जा रहे because it over articulates everything, right? So there's a lot of just stuff that it does that has to be verified. It's not like तुम उसे छोड़ सकते हो, but that the process is tedious, like code changes and pull request and वो पूरा GitHub management merge. All of this was very tedious, and this is a pain point that Cursor solved with code assistance, and now it has added other abilities also solving it. So this is a real gap in the market that they're selling to. But अदर स्टार्टअप्स जो अभी तक लाइक पहले जो वाई कॉम्बिनेटर के जितने जो चल रहे थे, मतलब उनके जो पैसे पैसे उड़ाने उड़ाओ, को पैसे. फंडिंग है भाई, सबको फंडिंग मिलेगा. तेरे को फंडिंग मिलेगा, इसको फंडिंग मिलेगा, भिखारी को फंडिंग मिलेगा. तो वो that era was what was the model that you have a bunch of money, excessive tech money floating around. तुम 10-15 बच्चों को पकड़ो जिनको के अंदर आग है, हम बिजनेस करेंगे, उनको पैसे दो, 100 में से एक कोई चलेगा, वो 100 बिलियन बना लेगा, सारे पैसे रिकवर. दिस इज द बेसिक मॉडल. बट उसमें क्या था कि वन सॉफ्टवेयर और समथिंग यू वर बिल्डिंग, राइट, एंड एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 50 एटलीस्ट 10-15 लोगों की टीम लगेगी. So Hmm. this thing never changed, no matter whether you were funding a startup or you had an older company. But Claude आने के बाद क्या कि value of AI is not something that's directly communicable. We both also struggle with that. It's like there are so many AI training providers in the market. And we are like, अरे हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छे का मतलब क्या है? सभी लोग कर रहे हैं. सभी तो चैट कर रहे हैं, तो आप भी चैट ही तो सिखा रहे हो, ऐसे लगता है लोगों को. डिफरेंशिएटर गायब हो गया है ना, करेक्ट. क्योंकि डिफरेंशिएटर has changed places, it has moved to use cases.
Hmm. तो यूज केस इज अगेन ओपन एंडेड थिंग. तो दिस इज द मेन रीजन कि पैसे तो है डाल रहे हैं, बट उसका जो वैल्यू साइकिल है उसके लिए तुम्हें लोग चाहिए जिसको उसका पूरा इंटेलिजेंस ढंग से यूज करना आता है, अच्छा यूज केस बनाना आता है, एंड देन वो यूज केस का प्रोडक्ट बना के फिर मार्केट में बेचो, फिर लोगों को कन्विंस करो खरीदने के लिए, तब वो पैसे वापस आएंगे. Correct. So I feel like this basic economics is has to be looked at Hmm. before running your number कि अरे एआई में बहुत पैसा है. अरे है, समंदर में बहुत पानी है फिर भी सूखा पड़ता है ना. It is accessibility to drinkable water that is the bottleneck that solves the problem. यस, So that. एआई में प्रॉफिट इज द बॉटलनेक. आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बट अभी बिकॉज कोई दूसरा पर्सन भी सेम चीज कर सकता है क्योंकि उसे भी क्लाउड अवेलेबल है, तो यू हैव टू बी श्योर अबाउट आपका सॉल्यूशन प्रॉफिटेबल है कि नहीं, आपको ऑडियंस मिलेगा कि नहीं, तुम कस्टमर पकड़ोगे कहां से, या एमवे के जैसे घर घर जाओगे और सब हका लेंगे. Yes, MLM scheme is the next workable idea. तो करेक्ट, फंडामेंटल जो बिजनेस के प्रिंसिपल्स है और इंपॉर्टेंट है एआई के एज में. एंड द कस्टमर्स, एनीवन हु कैन प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट which can which is profitable maybe even without AI is fundamentally a sound product. If you need AI to be profitable, it's not a good idea. It should be profitable, I would say, either The ways, right? idea should be profitable with or without AI. AI makes it easier to get there. Correct, That I feel correct, like that has to be the approach. correct, correct. Yes. So AI has come very far. Okay, and there was a. I'll show you guys one benchmark which was extremely crazy. Okay, we talked about AI report. This is a website where it talks about what is the cost reduction in AI prediction cost. Okay, this says every year the price of the same call has reduced 40 times. And if we look back from April 2023, from that time we have had, I would say, how much? 100 to now, how much we have? 400 times the cost reduction total since Bard came, since ChatGPT 3.5 came. 400 times. Let me check. So if you were making 400 rupees per product per Yes, head, before. then अब तुम 1 रुपए कमा रहे हो. So all you earned was because of your AI feature, and suddenly प्राइस Gemini, आउट हो गया वो. yeah, suddenly Gemini model आया. Gemini has lots of things which can build 3D stuff, and now no one will come to your startup. That is why these wrapper companies are at mercy of these Claude and Gemini, It's a because full mafia only, na. I'm going to take a hot take, do a hot take. yes, This is a monopoly. There's a chip yes, monopoly. There is a hardware monopoly, hence. Then all the best models are closed source. hmm, Claude and Gemini 3 and Opus, all of them are closed source. correct, And यू जस्ट आर तुम्हारे पास कंप्यूट भी महंगा है ना, अभी तक कंप्यूट भी एट अ लार्ज स्केल अवेलेबल नहीं है आम लोगों को. लाइक hmm, नियो क्लाउड सर्विसेज एटसेट्रा आर सपोज टू डू दैट, बट इट इज नॉट दैट थिंग इज नॉट सेट अप येट. correct. तो वो भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है. तो अभी क्या करें, कहाँ जाए इंसान. यस, जॉब भी नहीं मिल रहा, और जो और जॉब है जॉब वो भी उनको नहीं मिल फायर कर रहे हैं, और लोगों को जिया भी नहीं जा रहा, मरा भी नहीं जा रहा, रहा, जिया भी सोल्यूशन भी नहीं जा रहा, और मना भी नहीं. नहीं जा रहा है. और जॉब का अल्टीमेट राइट नाउ, ये जो यू शोड मी दिस 40, सो 40 टाइम्स पर ईयर लेस हो गया है, ठीक है. कंप्यूट स्टॉक ग्रोथ 2.3 टाइम्स से बढ़ रहा है, ट्रेनिंग कंप्यूट 5 टाइम्स से बढ़ रहा है, बट एल्गोरिथमिक प्रोसेस एफिशिएंसी 3 टाइम्स से कम हो रहा है. बट लार्जेस्ट डेटा सेंटर में 6 लाख ये है, बट फ्लॉस पर. तो दिस
makes no नो sense. सेंस, नो There is सेंस। no sense to this अरे because तुम what it is पैसा कमा ही नहीं सकते, मतलब तुम जो भी कर रहे हो नेक्स्ट ईयर कोई भी बंदा उसको कॉपी करके 40-50 टाइम्स चीप। अरे 40-50 टाइम्स मजाक है क्या यार? 40-50 दस। टाइम्स चीप है। तो क्या है कि इवन इफ तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो और तुमने पैसा बहुत है तुम्हारे पास, करेक्ट। तुमने डाला तो तुम 40 टाइम्स पर ईयर पे पैसा तोड़ोगे उस पे। एंड देन तुम्हारे जीपीयू जो हार्डवेयर है वो भी तो आउटडेट हो रहा है ना। दैट्स व्हाट दिस सेज कि तुम्हारा करेक्ट। यस। ट्रेनिंग कंप्यूटर। लाइफ साइकिल इज 3 इयर्स बाय द वे। कोई भी हार्डवेयर तुमने चिप जीपीयू बाय करते हो जो 1-1 करोड़ की है, 3 साल में इट्स फुल्ली आउटडेटेड। तो सपोज मेरे पास $1 ट्रिलियन है, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोना शोकेस हाउ रिडिकुलस दिस नंबर है, okay? मेरे पास $1 ट्रिलियन है जिसको कि मैं डालूंगी 6 लाख H100E में, हम्म। जो कि ट्रेनिंग वो 5 टाइम्स पर ईयर पे उसका कंप्यूट बढ़ेगा। तो H100E का जो करंट प्रोसेसिंग पावर है वो आउटडेटेड हो जाएगा बाय 5 टाइम्स। तो मेरे को, नहीं वैसे नहीं, ये डेटा सेंटर रिक्वायरमेंट 5 टाइम्स बढ़ रही है। सॉरी सॉरी, डेटा सेंटर रिक्वायरमेंट 5 टाइम बढ़ रही है। तो अभी 6 लाख का मेरे को 5 टाइम मतलब 30 लाख मेरे को रखना पड़ेगा जीपीयू फॉर एल्गोरिथमिक प्रोसेस प्रोग्रेस जो 3 टाइम्स से एफिशिएंट हो रहा है। ये कैंसल आउट ही हो जाता है दोनों, वो मतलब कैंसल आउट हो रहा है ना। तुम्हारा 1 ट्रिलियन का जो है ना, 1 ट्रिलियन है 3 साल में, को तुम्हारी कॉस्ट 1 ट्रिलियन के जगह पे 1 ट्रिलियन बाय 40, नहीं 100, मतलब तुम वो और 1 ट्रिलियन में 100 1 बिलियन होता है ना। बाय 1000 बिलियन होता है, सो 10 बाय बिलियन 10। 1000 तो 10 बिलियन। तो तुम्हारा जो है और तुम ये 10 10 बिलियन इज जस्ट इन्फ्रेंस प्राइस रिडक्शन, ओके। और ये 1/3, 3 टाइम्स अल्गोरिदमिक इफिशियंसी हमने काउंट ही नहीं किया, 3 टाइम्स पर ईयर है, सो मतलब 9 टाइम्स इफिशियंट इन 3 इयर्स। तो मतलब तो आप तीन, कम जीपीयू लगेगा ना। हाँ तो मतलब 10 बिलियन भी नहीं पर बचे, तुम एक उससे बिलियन हो फास्ट गया। नहीं। सो एक ट्रिलियन बिलियनियर बनने का बन जाएगा एक 3 साल में। मतलब यू नो व्हाट इट मींस, यू विल लूज मनी एंड गेट आउटडेटेड एट 15 टाइम्स द स्पीड। यस, 3 15 into टाइम्स द 5 स्पीड। तो तुम $1 ट्रिलियन 15 टाइम्स की स्पीड से तोड़ोगे नहीं एवरी यार, ईयर। आई थिंक वी आर बीइंग कंजर्वेटिव। टोटल आंसर पर ईयर ना 40 into 3 है, देखो ना यार। इट्स ओह, 120 टाइम्स। 120 टाइम्स, 120 टाइम्स इंटू 5। नहीं ये क्योंकि ट्रेनिंग कंप्यूट बढ़ रहा है ना, तुम नंबर ऑफ जीपीयू बढ़ा रहे हो ना बाय ओ 5। अच्छा, मतलब पैसा तुम्हें ज्यादा डालना पड़ेगा, मतलब हाँ, ओ तोड़ने वैसा। के लिए ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा। वाह, This दिस makes इज no न्यूज। sense in my overall point. These economics, these numbers करेक्ट। make no sense. यस। तो this fundamentals तो है ही नहीं इधर, मतलब करेक्ट। nothing makes sense. तो ये वही अपना श्रद्धा के हिसाब से करो, राम करने भरोसे चल लगा। रहा है ये। सैम अल्टमैन भरोसे, ओपन एआई भरोसे चल रहा है सब। बोल रहेगा क्लॉड का बंदा क्या, अरे क्लॉड कॉन्शियस हो गए। खट्टा पैसे तो अभी भी नहीं बन रहे। और अरे क्लॉड से ज्यादा पैसा जो गांव में धर्मगुरु रहते हैं ना, जो ऐसे फेक फेक दवाई देते हैं, वो कमाते हैं यार। कितना अच्छा बिजनेस मॉडल है, लोगों का आस्था है और करेक्ट। उसको फार्म कर रहे हो तुम कुछ भी करेक्ट। करके प्लेसिबो करेक्ट। इफेक्ट से पैसे कमा रहे हो। एक्सीलेंट, पैसे, इट्स जनरेटिंग रेवेन्यू, व्हाट इज यस। दिस डूइंग, आई डोंट नो। आई फील लाइक ऑल दिस इज डन इज सबको एआई चैंट करवा रहे हैं। करेक्ट। करेक्ट। उसके अलावा क्या हो रहा है? तीन कुछ कंपनी टोटल पैसा कमा रहे हैं टोटल अभी तक। सीरियसली सीरियसली सीरियसली, पैसा तो इतना गति तोड़ फोड़ रहे हैं पागल जैसे। 120 टाइम्स लॉस पर ईयर यार, दिस इज द वर्ल्ड्स वर्स्ट बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल। एंड द आई वुड से इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, बट किसी को यूज ही नहीं करना आता। दिस इज जस्ट डम। अपना प्लेबुक कहाँ चेंज हुआ है? अभी तक का जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास इज फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2।
Computers, von Neumann architecture is कब हम्म का 1942 शैनन हाँ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड थ्योरी वॉर करेक्ट 1948 का पेपर है या 45 हम्म का वर्ल्ड वॉर हम्म टू के टाइम जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से जो बिजनेस बना है ना मिलिट्री टेक था ये सब इंटरनेट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो सब कमर्शियलाइज किए गूगल वगैरह के थ्रू इन द पास्ट 30 years हम्म एंड बट इट इज स्टिल बेस्ड ऑन वर्ल्ड वॉर टू टेक उसका जो उस टाइम का अप्रोच था कोल्ड वॉर के टाइम जो पॉलिसीज थे करेक्ट उससे वो हुआ है एंड दैट करेक्ट डजंट वर्क बिकॉज इट्स नॉट डिटर्मिनिस्टिक हम्म तो इट इज लाइक कि इस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ एल्गोरिथमिक वो मतलब तुम्हारा डेटा एंड एल्गोरिथम का जो अद्भुत मिश्रण है उसमें द प्लेबुक ओनली हैज टू बी चेंज इकोनॉमिक्स इन्वर्स हो करेक्ट गए ना तुम करेक्ट पैसा डाल रहे हो पैसा तोड़ने के लिए ये कैसा बिजनेस मॉडल है इट इज ऑब्वियसली रॉन्ग तो करेक्ट या yes so that is our discussion about our state of AI. We had a lot of different thoughts, and I would say it makes it sound like AI is not a good field to invest in. That's not truth. I would say once you are technically strong, I think there is a lot more space here, especially if you have domain knowledge. So I would say, yeah, you want to conclude Shreya in 3 sentences? How to I conclude want to this? make some predictions. Okay. Okay. Hmm. I'm going to make predictions that किधर मेरे हिसाब से इन डोमेन्स लाइक कोडिंग एंड स्टेम Hmm. research Hmm. I think AI is going to go places. Hmm. So anyone building this type of knowledge work, anything, whether they are building anything that aids, like that uses that those particular aspects, coding, compiler, programming, microcontroller, anything that was very tedious and difficult before, and is Hmm. space में जो है coding and STEM में, Hmm. I feel वो जल्दी प्राइज आउट होगा like बड़े models are not gonna be somehow better at maths is maths so I think वहां पे वो optimize हो जाएगा मतलब they'll stop scaling the models that's my Hmm. prediction number one. Hmm. Prediction number two is I would say कि this cycle of innovation is gonna slow down Hmm. because bottleneck abhi bhi hai people upskilling. Hmm. You can't leave everything to AI. It is Hmm. just not sustainable. Hmm. तो लोगों को अपस्किल होने में टाइम लगेगा बिकॉज जॉब मार्केट सब डिसरप्ट हो गया है तो Correct. 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 it will slow down. It will slow down, I would say, in the next at least 5 months. This अभी जो peak इसका आया है will definitely slow down because Hmm. all companies because अगस्त में Europe AI Safety Act will get implemented Hmm. in all companies. Hmm. So that also acts as a slowing down mechanism because then Hmm. it establishes some standard protocol of checking and verification and all of this and people will get redistributed. तो सब थोड़ी ना जितने सारे लोग जो लाखों लाखों में फायर हुए हैं they Hmm. are not disappear overnight, they will Hmm. get redistributed. तो Correct. वो नया सिस्टम क्या है वो चीज डिसाइड होगी आई फील एंड दैट इज गोइंग Hmm. टू पुट अ पॉज इन दिस रैपिड एआई प्रोग्रेस. So do you think then winners decide होंगे ये 2026 में? 2026 में विनर्स डिसाइड होंगे बट नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इट विल बी बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. तो विच एवर मॉडल प्रूव्स टू बी रिलायबल Hmm. by the entire industry like synonymously Hmm. is the winner. So definitely there will be a winner for let's say next 1 year. Like 1 year के आगे predict नहीं कर सकते. It's Hmm. moving too fast. But what model will get scaled at industry standardized? People will be trained around it. You have to Hmm. know it like any language like C, C++, etc. उसके Hmm. workflows, उसके skills, उसके features. सो ये कौन सा वाला होगा एक या दो ही होंगे उससे ज्यादा Hmm. नहीं होंगे एंड इंडस्ट्री विल कन्वर्ज अराउंड दिस बिकॉज बिना लोगों के नहीं होने वाला है, ये भी Hmm. गारंटीड है. Hmm. तो राइट नाउ माय टू प्रेडिक्शंस आर कि वन इज इट इज गोइंग टू स्लो डाउन Hmm. एंड अदर वन वाज व्हाट वाज फर्स्ट वन. Uh, मैं भी भूल गया वन बहुत. मोर प्रेडिक्शन आई मेड.
Yes. So that's Prediction. a this is a very strong prediction, guys. This is 100% going to be true, even though it's been forgotten already. Yes. What was it? Okay, cool. So that was our discussion. We'll be discussing rest of the state of AI and everything in remaining live sessions, and we'll build on our understanding in each session.